Just trying to good to go. Ready? Okay. So finally, an auspicious good afternoon to one and all present here to the online world. My name is Siddharth Jain. I happen to be a student of MA Psychology at Bhopal School of Social Sciences. And the Department of Psychology brings to you an exclusive session on Netiquette. In brief, it's a simple guide on how to behave on internet. And as the guest speaker, we have Honorable Mr. Rajiv Mishra. And I'll be telling you in further detail about him in a minute. And on behalf of Department of Psychology, I would also like to extend my warm greetings, gratitude, and respect to Honorable Principal Dr. Father John PJ for being the patron, for being the guiding force for students, for professors, and for all of us here at the Bhopal School of Social Sciences since years. My heartfelt welcome to our respected Vice Principal, Dr. Sister Sonia, whose presence has been like a support system. And I would also like to extend my greetings to Professor Dr. Vinay Mishra, sir. He has been the backbone of the college and the department. He is the pride of the college. And last but not the least, I would like to extend my respect and gratitude to the HOD of Department of Psychology, probably one of the youngest HODs, Mrs. Siji K. Sani. I'm so sorry for that error, but yes. Let us move ahead and let me introduce you to the man of the moment, the person who's there to conduct and host this wonderful and incredible informative session on Netiquette. He is Mr. Rajiv Mishra. He is the managing partner of Mystique 7, that happens to be a marketing communication studio. He also happens to be an alumni of IIM Ahmedabad and dearly Bhopal School of Social Sciences, Campion School, and St. Paul School, Indore. He is a marketing, advertising, and business development professional, having more than 30 years of professional experience. Yes, you got that right, 30 years of humongous professional experience. Last but not the least, he also happens to be a poet, a writer, a copywriter, even a talk show host and anchor. And I would request all of you to welcome none other than Mr. Rajiv Mishra. And before we begin with the conversation, I would like to request every one of you to please keep your queries and questions ready post discussion. You can drop the questions and queries in the chat box. We'll surely ask Rajiv sir to answer most of them during the end. And I would also request you to please keep your mic and screen off in order to ignore any sort of disturbances. And yes, last but not the least, you are not supposed to share your screen. So please let us proceed with this incredible discussion. Over to you, Mr. Rajiv Mishra, sir. Hi, everybody. Can you hear me? Am I audible? Yes, sir, you are audible. All right. Thank you so much, Siddharth, for this lovely introduction. You always exaggerate a bit, and I still love you for that. So continue your good job that you're doing. And my gratitude to Siji ma'am and Nida ma'am especially, who's actually borne the brunt of all the entire to and fro conversations that we've been having for this session. Special thanks to Father Principal. I mean, he's been such an amazing person I've been meeting over the years. And I mean, the new things which are happening in BSS, a lot of credit goes to him. And my best wishes for all the new things and all the and I'm hoping that we get to see BSS as the university pretty soon. Very special thanks to Vinay sir. But I mean, thanks is a very mild word for him. Huge gratitude for him. But, you must be surprised that this session for the first time in my life actually got developed because of Vinay sir only. This was about 4 years back when I did the first social ethics session with Vinay sir, and when I met him, he said, "Yeah, listen, we need to cover this, and students need to be aware of." Students need to be aware of
all the ethics which are happening, and that's how this session got developed and got upgraded over the years and everything, and have been used in a lot of places. And this is again my opportunity to be at the BSS group. I mean, every time I come to BSS is such a nostalgic thing for me, passing out from here, being the classic backbencher, and still being able to come back to my college and contribute something, and share my experiences. This is a very special moment for me. Every class I take, every session I take, this is really, really special. So thank you, everyone. Thank you, my gurus. Thank you, my batchmates and everybody, and the alumni group which is there. And thank you, Father Principal. I mean, thank you, the management, for calling up alumni and making them an important part of the college academics, basically. Calling them and making them share the experiences. So with all the gratitude here, let's move on to the topic and the presentation today. I assure you it's going to be interesting for you. The only thing I would request is that I mean, if you can switch on your videos there. I mean, whatever, if you're in pajamas or whatever, doesn't matter. I mean, your faces are beautiful, so be visible as much as you can. So let me start with today's presentation. Hi, Vanessa, I can see you. So let me begin with this. Okay, so I mean, the network will play a little role. Obviously, वो अपनी importance दिखाना चाहता है उस moment पे. So network में. Okay, you will not be able to see me. I mean, I will not be able to see people now as I share the screen here. So let me go to the presentation. Let's take a moment to start. Hello. Hi, am I still audible? It's very clear. Can everybody see the screen? Yes, sir. Yeah. So Nidha ma'am, you're going to be my support for the videos playing and the audios playing and the screens. There any technical snag, because I can't see anybody? Please let me know here if anything is not working. Yeah, thank you. So let me begin this journey with a very simple ritual which I do with every session of mine. This is just symbolic. The image here is symbolic. Take a moment to give thanks to your gurus. कि सरस्वती माँ के एम्बेसडर्स कौन है इस धरती पे? So हमारे जो गुरु है, और गुरु आपके सिर्फ टीचर्स नहीं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. So just take a moment and say thank you in life to all the good things that you have learned, to all the things that you have learned, the education, the life per se. Just take a moment and just say thank you. So Mystique 7, basically my studio, which is marketing communications. बहुत layman term में बताऊं तो हम लोग advertising बनाते हैं strategy के साथ में. We are the marketing magicians. मेरे बारे में बहुत सारी चीजें बता दी गई ऑलरेडी, पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बस बताना चाहता हूँ कि इस 30 साल के एक्सपीरियंस में बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है उन ब्रांड्स के साथ जहां से बहुत कुछ सीखने को मिला है इंडिया में और बाहर. डिफरेंट कैटेगरीज, एफएमसीजी से लेकर एजुकेशन तक, चाहे रियल एस्टेट हो, ऑफिस ऑटोमेशन हो, रिटेल हो, मीडिया हो, पब्लिशिंग हो, लाइफस्टाइल गुड्स हो, मोबाइल एप्स हो. आई मीन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस have got me here in front of you today. एक वक्त था जब मैंने 20 साल में कुछ 12 शहर बदल लिए थे और कुछ 20 या 18 घर बदल लिए थे. So that's the kind of life I have led, learning every opportunity to move. I have taken that, and I advise you कि जब भी कहीं बाहर कहीं किसी भी शहर या देश में काम करने को मिले तो जरूर करिए. वो आपको बहुत ज्यादा सिखाता है, आपकी पढ़ाई से कहीं ज्यादा. और यही तजुर्बा है जो काम आता है, और यही तजुर्बा है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू. जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो आपको ऑलरेडी पता है, पर मैं उसको आपको ऐसे शेयर कर रहा हूँ जैसे आपको फिर से एक रिविजन है, यूं मान लीजिए. और जो भी मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ
उसमें जो भी ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, उसका सिंपल डिस्क्लेमर है कि उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट बीन यूज्ड फॉर एजुकेशन पर्पसेस, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इतना याद रखिएगा कि आज जो आपको मिलेगा, आज जो आपकी जिंदगी आप जहां से शुरू कर रहे हो, वो आज आपका पहला दिन है। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो और आप कोई नई चीज करना चाहते हो, तो बी रेडी, ट्राई एंड टेक वॉट एवर यू कैन फ्रॉम दिस। कुछ सिंपल ग्राउंड रूल्स हैं, और ग्राउंड रूल्स बहुत सीधे साधे से हैं कि प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए। मोबाइल की क्लास है, नेटिकेट की क्लास है, तो पहला नेटिकेट, पहला एटिकेट और नेट है अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। कुछ नहीं होने वाला 1-1.5 घंटे में। अगले 1-1.5 घंटे से मुझे याद आया कि हम ऑलरेडी 15 मिनट बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं। मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा प्लान किए थे ऑलरेडी कि आप लोगों से मांग लूंगा, तो मान के चलिए कि हम लोग 2 बजे तक फ्री हो जाएंगे। सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। पार्टिसिपेशन अगर हम ऑफलाइन होते तो बहुत मजा आता, पर यस, एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल हैव योर क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू आंसर विद द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। अगर आप नोट्स लेने की कोशिश कर रहे हो या प्लान कर रहे हो तो मत करिए। जस्ट पुट योर पेन एंड पेपर असाइड, जस्ट एंजॉय दिस, जस्ट एंजॉय एंड एब्जॉर्ब एज मच एज यू कैन, दैट्स इट। तो बहुत सीधी सादी सी चीज है, हम नेटिकेट की बात करते हैं, जो बेसिकली एटिकेट है नेट का, और कुछ भी नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ मैन क्या है? दिस इज व्हाट इवोल्यूशन ऑफ मैन टू मी व्हेन इट कम्स टू नेटिकेट इज। और कुछ इस तरह से हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं। सीता मैम प्लीज मुझे बता दीजिएगा जब वीडियो आ जाए और ऑडियो आ जाए, जस्ट कंफर्म दैट। ओके सर। सर आ गया वीडियो। वेरी गुड। But sir, audio is not there. Only video is playing. Wait a minute. Only audio is playing, only video is playing? Yes sir, audio is not there. अच्छा रुकिए, let me do it again. अभी देखिएगा, मेरी आवाज आ रही है ना? Yes sir. ऑडियो आ रहा है? No sir, audio is not. Okay, please bear with me. Please, Yes sir. please bear with me. Please, just give me a moment. Just give me a moment. I'll have to just go to the settings here. Wait a minute. Just give me a moment. Please bear with me. Just bear with me. Where do I? Can somebody help me with the audio settings here? Just. Yes, sir. This is Eugene here. Yeah, hi Eugene. I'm just checking audio. Sir, actually, you might have need to paste your video to your other tab. Then you can share it with your tab. Then sound will come. Yeah, I've done that there. I mean, it is already there, connected. It's showing microphone is clear, speakers are clear, and let me play again. Okay, let me try. All right. Just let me know if it happens now. Did you get the audio? Not yet. Not yet. Not yet sir. Did you get the audio? No, sir. No sir. No sir. Oh shit. Okay, hold on. I don't know why it should play automatically.
you need to drag and drop the video to a new tab of your Google Chrome. Then you have to select share from a tab. That is also best for video and animation. There you will be getting the option of enabling sound for videos. Acha, I'll have to stop presenting first. Yes. Hmm. Then Okay, you have to wait. drag the video to your tab, Chrome tab. Okay, wait a minute. So present now I'll have to go to a tab. First, you have to drag and drop the video to a new tab. Oh, but it plays automatically, no? I don't think so. That in Google Chrome, it is not there as option. You can only Oh. share the audio with your tab, Google Chrome tab. Acha, okay. Let me. Oh, we'll have to keep switching this. Yes. Oh no. If it's going to take enough time, you can. So, okay, let me pick up a window now. So hold on. So, okay. Share, or we'll have to keep changing this. Hannah, can you see now? Yes, we can see, sir, but we are still not there. Audio is still not there. Yes, sir. Audio is still not there. Ouch, yaar. So do we have to share the entire screen, Eugene sir? No, sir, no, I'm only the tab. Only a tab. Okay. Yeah. I'm just showing a tab. I've done it earlier. I mean, I've used this earlier. It works. But sir, Wait a it minute. is VLC Media Player. It is coming from VLC Media Player. It should come from a new tab from the Chrome browser. Can you link it to the YouTube video and go Chrome? Yes, sir. You can also do that. You can play the video from YouTube also. You can share that tab also. I know it's already linked and embedded here, Eugene. That's the only problem. Okay, let me try. Because there are a lot of videos and I would not like to. Best for video and animation, a tab. Okay. Share a Chrome tab. No. Just look for an option. There will be an enable audio or something related to audio option will be there. Yeah, I know. I'm just looking at that because it was already audio track. Okay. Let me see. Did you get the audio? Did you get the audio? No, sir. Oh yeah. Shit. Okay, wait. Can we just have a look at the video and you can make us understand the conclusion and the audio part as well? Did you get the audio? No. Not yet, sir. No, sir. And it's already actually 12:25, so we don't want to run out of time. I know. I understand that. There's a delay at the start and the delay now on the technical snag. I mean, we'll have to live with this. So hold on. I'm just working on it. It's worked earlier, so it should work now. You getting it now? Are you getting it now? Not yet, No, sir. sir. There is no audio. Still, there is no audio. Right. I'll have to skip this. So we'll move on from here, and I think there'll be a lot of video loss here. Sure, sir. Please go ahead. So I don't know, maybe some technical snag which. Can you hear me? Am I audible now? Yes, sir. All right. So let's. So this was basically and video basically showing that how the generation today has changed, and this was about the new generation basically. So this is basically saying I am the new millennial.
You know, who are the millennials that we're talking about? You guys all who are attending this, except for the teachers, are the millennials. Millennials are basically born between 1980 and 2000. And these are people who are basically the largest growing population at this moment. They would constitute almost 75% of the population in the coming years. By 2030 is the estimate. They're confident, they have high expectations, they're achievement oriented. They have a lot of new questions. They have a dominance of social networks. Most ethnically, racially diverse these people are. And you know, they are stressed, huge stress these millennials are. And you know, the dirty dozen of their stress starts with parents. इतना बड़ा स्ट्रेस है यार पेरेंट्स का होना, सिर्फ पैसे दे दो, खाना दे दो, घर दे दो, इसके अलावा क्यों परेशान करते हो, right? That's the basic idea. But that they are the stressed people. And then with school, college, अरे बाबा attendance नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? इतनी सारी attendance के पीछे क्यों पड़े रहते हो? Friends, relationships, obviously a huge stress. और उसके ऊपर अगर if there is a love life, that is the biggest stress of life. So these are things which, you know, then coincide कि मेरा appearance भी ठीक होना चाहिए, मुझे ये dress चाहिए, मुझे वो makeup चाहिए. All these things have to be there, and the gadgets and the data are the new stress. The biggest stress, in case if I have to put in the ranking, the gadgets and the data are a huge stress. और data तो बहुत बड़ा stress हो गया है. अगर data खत्म हो जाए तो लगता है life ही खत्म हो गया है. पैसे obviously, हर चीज के लिए पैसे चाहिए. ये चीजें क्यों पैसे मांगती हैं? काश ये चीजें मुफ्त में मिल जाया करती. होमवर्क और असाइनमेंट्स, ऑब्वियसली यू नो, ये प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट बनाना है, और क्या एग्जाम्स काफी नहीं है, उसके ऊपर भी असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं. इतना बड़ा स्ट्रेस है इन सारी चीजों का. और फिर उसके अलावा बाकी की जिंदगी का मैं क्या करूं? देयर आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देयर आर अदर थिंग्स दैट आई हैव टू डू इन लाइफ. और फिर टाइम नहीं है खाने के लिए और सोने के लिए. ह्यूज लैक ऑफ टाइम. ये है ही नहीं जिंदगी में. मेरी लाइफ इतनी हेक्टिक है, इतनी सारी चीजें मेरे साथ करने के लिए हैं, मेरी टू डू लिस्ट खत्म ही नहीं होती. और उसके ऊपर इमेजिन अगर ये हो जाए कि मेरा फोन गुम जाए. जस्ट इमेजिन आई लूज माई फोन. So I'll try once again. Let's see if this audio works or not. Please let me know. Are you getting the audio? No, sir. No, sir. Sir, we are not getting audio. You getting the video? Yes, sir. This is really ridiculous, you know. I don't know what's wrong with this. Let me try once again. Okay, you getting the video? Video is there, but not the audio, sir. Okay. So I'll have to, I'm really sorry. This is a big spoiler. I have to skip the videos because there is no audio, and I have no idea why, because this was all working fine. So my apologies for this technical snag. I wish I could sort this out. But basically, we are so paranoid with losing our phone that, you know, typically this is the problem. When you lose your phone, it's mostly on silent, right? And that is where the problem is. You can't even find it, even if it's in your pocket and you keep searching the entire world. Sometimes it's like this, that, you know, your phone is to your ear, speaking to somebody and said, crap, I can't find my phone. So that phone, what has done to you? Hello, my name is anxiety. This is what the problem is. Anxiety, nomophobia is on the rise. There is a term for this. Yes, we are very good at creating terms, you know. So nomophobia is no mobile phone phobia. The fear of being out of cell phone signal range, the anxiety relating to the sudden loss of a cellular connection includes nomophobia. This is, you know, a huge thing happening in our life.
66% of the population suffers from it. If you call it a disease, yes, it is there. 66% of the people sleep next to their phones, and 20% would rather go shoeless for a week than temporary release of their phones. I mean, which is really funny. And this is a very, very dangerous situation, you know. The only death I fear is my phone batteries. I don't fear anything else. And my phone's battery should never die. So the question is, are you addicted to your mobile phone? Yes. I mean, you know, keep calm. You're not alone. That's the best part of it. If you are, you're not alone. So addiction to mobile phone, it's huge. And, you know, everybody in the world is going through it. 5 in 10 people confess to being addicted to the mobile phone, which is like 50%, you know, almost that we're talking about. The simple thing is, how much are we willing to sacrifice? What people would rather give up for a week instead of mobile phone? People would give up alcohol, chocolate, sex. I mean, you know, just for their mobile phones. That's a huge thing. Just to give you a perspective, the world, the way it is changing, you know. Almost 8 billion population, 5 billion has mobile phones, unique users. Almost 4.5 billion internet users, right? And 4.2 billion active social media users. Just look at by the device. 56% mobile phones, 41% laptops and desktops. That constitute your entire traffic by device. There's nothing else which we talk about. Almost about worldwide averages 6 hours 54 minutes for the time spent on the internet. I mean, when I was going through these statistics, when I look at Philippines on the left corner of mine, 10 hours 56 minutes. I don't know what 11 hours they do on internet, but that is the use they do. Philippines, Brazil, Colombia, South Africa, Argentina are the top 5 nations using the internet time, and India is pretty much there at the world average with 6 hours and 36 minutes compared to the world average of 6 hours 54 minutes. Out of the 6 hours 54 minutes, typically what is the time that we spend on media, that we use internet? About 3 hours 20 minutes is we spent on broadcast and streaming. Social media is about 2.5 hours. Reading press, online physical content is about 2 hours. 1.5 hour of music, 1 hour of other broadcasting, radios and everything, which we don't have in our country as yet, but yes, that would be growing definitely. Of the 4 or 10 minutes that you spend on your mobile every day, typically 44% is spent on social media. Look at the huge chunk. The next 26% is on video and entertainment, and everything else is, you know, gaming is just 9%, and 21% actually constitutes a lot of these adult content people keep seeing, you know, across the world, not just you. So the time spent on social media worldwide, overall, we saw the time spent on internet was about 6 hours 54 minutes. Out of that, on the social media is 2 hours 25 minutes, and India is just about there. Next to world average, that wide band, is India. And Philippines again tops the list, with Colombia coming second. World's most used social platforms, Facebook obviously takes the cake, and, you know, YouTube number 2, WhatsApp number 3, Messenger number 4, Instagram number 5. That's the thing. And look at Facebook users globally. India is leading the pack. From here, if you see, Facebook is the top, and from here in India, if you see, Facebook is leading the pack in India. Instagram, we are just the second. We are actually the fourth, sorry. United States, Brazil, Indonesia are the top 3, and we are the fourth. Among the top 25 countries on YouTube, India is second. Look at the amount of data we're using. And WhatsApp, we are like Facebook. You know, we are more than Facebook, in fact. WhatsApp is like, you know, fresh air of breath for all of us in this country. LinkedIn, your professional platform, you know, almost 700 million members. India, about 70 million. 10% of that, 10% of the world is India. You youngsters use this app hugely. You know, Snapchat is one thing which I've seen youngsters using. USA leads the pack, 103 billion, and India is just about 28 billion. So look at the Facebook and the look at the Messenger and the WhatsApp divide over the world. So all the blues is the Messenger. For chatting, what does the world use? So blue is all that is for Messenger, and the green is all WhatsApp. The red, which you see, is China, basically, who use their own app called WeChat. The reasons for using social media,
Very, very interesting. Stay up to date with news and current views. Find funny or entertaining content. Fill up spare time. Stay in touch with what my friends are doing and share photos or videos with others. These are the top 5 things that the reasons why we use social media. And this is all possible because of the data that is happening in your life. From 3G, we have moved to 4G, and now we are very soon going to move to 5G. 10 Gbps speed. Right now we are at 100 Mbps. And I keep telling my kids, at 384 kbps, we used to say, wow, I mean, what? We are getting internet. And today my kids complain even at about 50 Mbps speed. So this is what the evolution of data consumption has happened. The world average is about 10 GB. We in India at around 5 GB. And the reason for this is India is growing very fast. Look at the cost of mobile data. The data, 1 GB data is just costing about $0.25 in India. And Switzerland, it's about $20 per GB of data. So, I mean, India is really, really low, and keep watching. The prices are going to increase in the coming years because we can't sustain it for a very long time. And this magic gadget has done everything for you. Contacts, calling, texting, there was a clock, calculator, music player, notes, games, torch, until this happened to you. And the convergent technology came in, the smartphone. I have spent half my life working with watches, and we used to always say, if there is one device where the convergence technology will come, it will be the watch. But we didn't even imagine that there would be something else like a smartphone, which will take over the world and, in fact, replace the clock as a timekeeping device. Today, you wear a wristwatch just as a fashion accessory. Your alarms, your time, your everything is on your smartphone. That's become your best friend. With all these apps happening around you, the world is on my fingertip. And the phone turned smart. While we were busy texting and talking, the phone turned smart. And we were wondering whether someday smartphone will be as smart as us. But the phone said, I'm smarter than you. I'm upgrading myself every day. Are you? It's become my favorite live-in partner. I can't live, I can't sleep, I can't eat, I can't breathe without my phone. And this phone has got me an access to a world called social media. Being social earlier meant meeting people outside, going everything. I mean, being the person who's visiting people, meeting people. But the media has changed this paradigm completely. And the social media with photos, with videos, and the camera in the phone has been a big blessing or a curse. I don't know. I mean, you're clicking everything. The food you are eating, it's more important to take a picture of that rather than eat it, basically, as I understand. So the social media has done dramatical changes here. Most of the teens, 50% is an old figure, but large number of teens are addicted to their mobile devices, and teens feel an immediate response to their notifications. I keep telling them to keep the phone silent. Suppose you switch off your notification and you check every half an hour. The world is not going to collapse. But the kids keep it on. For every notification they have to see, for every ping that is there, they have to see what is happening. And every teen is checking the hour. Every teen is checking. The hour is a little old kind of a figure, but they're checking pretty frequently what's happening on their phone. So Facebook 83%, Instagram 44%, Twitter 39%, Tumblr 15%. 1/3 of teens occasionally try to cut down the amount of time, but they actually are very rare. It's reducing. In their life, everything is out there for everyone to see. Everything. They have to share it with everyone. So it's like, when you meet after a vacation or a weekend, there's nothing there's nothing new you have to share. So it's largely shared already on the social media. You have already put your stories out. And what do you crave for from social media? What exactly are we craving for? What exactly is this young generation, the millennials, that they are craving for? Attention? Possibly. Yes, that looks like the answer. And what is that one thing they will never share on social media? Do they really want to share the problems? Do they really want to share that they're going through a bad time? Or they want to hide it? So that is to each their own thing. But that is one thing to be
really thinking about what is that one thing you will never share on social media. And when we talk about forgetting our manners when it comes to mobile phones, that is where it brings me to this part of the session, which is the most important part, where I need a little more attention from all of you. As we have grown up, we had forgotten a lot of manners, and social media is the new thing that we need to bring in our etiquettes around. How different it is from the old world or the real world. How different are etiquette from netiquette? Etiquette is all about personal courtesy, right? When you meet someone, when you greet someone, when you're behaving in a certain environment, that is called etiquette. What is netiquette? So before I get to that, let me take you through. I assume everybody is 18 plus here. That is my assumption. If somebody is not, please close your eyes and ears for a little while, for 2 slides only. But I'm assuming everybody is 18 plus here, and I'm taking you through some adult content here. Absolute adult content. This is your ticket for the adult content. 10 social manners you were taught as children and you forgot as adults. You need to bring back those social manners. Smartphone health risks that we need to be taking care of. These are scientifically being proven every day, and being shared in newspapers, magazines, all your online content. Radiation, hearing, eyesight, back problems, nerve damages, stress, anxiety, and depression is a huge thing. By seeing your peers doing things, you start comparing your life with that. Weight management, fitness levels, disrupted sleep. I mean, when your phone is next to you, obviously the radiation is working. I don't understand why you can't just switch off your phone and keep it aside and you switch it on in the morning. That's something really important that you need to take care of. Attention span, text loss, indirect injuries, male infertility, Parkinson's disease, Alzheimer, brain tumor, social effects. There are a lot of them. All these mobile health risks are coming, and more data and statistics are showing, more research is showing that yes, they are for real. So phone etiquette, phone manners, pretty simple. I'll run you through a few of them. And these are things which you already know. As I started in the morning, these are things which you are already aware of. We are just doing a revision so that at least you pick up a few and imbibe them in your life. A pretty simple thing. It is a phone for personal convenience, not for inconvenience of others. So mobile phone has given you an accessibility. जब चाहो जिसको चाहो जब भी फोन कर लो, और अगर वो फोन नहीं उठाता तो हम बुरा मान जाते हैं, अरे यार मेरा फोन नहीं उठाया. अरे भाई मैं किसी काम में बिजी होऊंगा यार, मेरा मूड ही नहीं होगा फोन उठाने का, वो भी पॉसिबल है. ये मोबाइल फोन मेरी कन्वीनियंस के लिए है, आपकी कन्वीनियंस के लिए नहीं है. मेरा मोबाइल फोन मेरी कन्वीनियंस के लिए है. और किसी को पोलाइटली बता सकते हैं कि यस आई वाज बिजी, और हर फोन कॉल उठाना उसी वक्त जरूरी नहीं है. प्लीज याद रखिए. अपनी रिंगटोन और कॉलर टोन, बाप रे, I mean these are things which I keep telling you. I mean I keep sharing with everybody. किसी के ना ऑब्ituary में जाओ, कहीं किसी के लास्ट रिचुअल्स अटेंड करने जाओ और वहां पे एक लाउड फिल्मी गंदा सा गाना बजेगा. I mean you feel so bad about it. आप घर में बैठे हो, कुछ गेस्ट्स आए हैं और एक मतलब लाउड एक कॉलर ट्यून या रिंग टोन होगी. So like really bad यार. I mean it's really embarrassing. So choose advice. I usually recommend use instrumental. जो भी आपको यूज करना है, अच्छा सॉफ्ट सा कोई भी इंस्ट्रूमेंटल. और आजकल स्मार्टफोन में तो इतने ऑप्शंस हैं, पिक देम वाइजली. Never shout when talking on the phone. Never ever shout talking when on the phone. Please lower your voice. हम बहुत एनिमेटेड और एक्साइटेड हो जाते हैं फोन पे बात करते करते, तो हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हम पब्लिक में क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं. और प्लीज स्माइल व्हेन यू आर टॉकिंग. इट शोज, फर्क पड़ता है. जब कोई आपको देख भी नहीं रहा, वीडियो कॉल पे नहीं भी, तो फर्क पड़ता है. आप टेस्ट करके देख लीजिए. व्हेन यू आर स्माइलिंग एंड टॉकिंग, योर एंटायर डिमीनर शोज टू द अदर पीपल, टू द अदर साइड. और जब बात कर रहे हो तो कुछ और मत करिए, आपका अटेंशन लॉस पकड़ा जाता है. आपने बात करते करते फिर आप कुछ लिखना शुरू कर दिया, फिर आपने कोई काम करना शुरू कर दिया, आपका ध्यान चला जाता है और वो पकड़ा जाता है कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द पर्सन यू आर टॉकिंग टू. व्हेन यू आर इन द चर्च, टेंपल, प्लीज थिएटर, प्लीज स्विच ऑफ योर फोन. प्रीटी सिंपल थिंग. जब ये एक अक्सर सिनेरियो मैंने देखा है, जब मैं सुपर स्टोर्स में जाता हूँ तो मैं अपना बिल पे कर रहा होता हूँ और लोग लाइन में खड़े हुए बिल पे करते टाइम, जब वो उसको ट्रांजैक्शन का बिल वहां इनवॉइस मिल रहा है और बिल पे कर रहे हैं और वहां फोन पे बात कर रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग समबडी एल्सेस टाइम. यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू द पर्सन हु इज मेकिंग दिस ट्रांजैक्शन टू यू. प्लीज डोंट डू दैट.
वेटिंग एरियाज में, हॉस्पिटल तो बहुत ही अमेजिंग है। हॉस्पिटल के किसी वेटिंग एरिया में या किसी लाउंज में आप बैठे हो और आप वहां जोर जोर से बात कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप बाहर चले जाओ और वहां जाके बात कर लो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे कभी भी नहीं, ध्यान से करो। और अपनी पर्सनल टॉपिक्स इतने लोगों के सामने क्यों बात करना है? व्हाई डू यू हैव टू डू दैट? प्लीज मेक श्योर दीज आर थिंग्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, और है ना मजे मजे में अपने घर की बातें बता रहे हैं, अच्छा ये हो गया वो हो गया एंड ऑल दैट यू आर डूइंग। यूज ईयरफोन्स, पर ईयरफोन्स का मैंने आपको रिस्क बताया, तो प्लीज ध्यान रखिए ईयरफोन्स यूज करते टाइम आपकी सराउंडिंग्स का ध्यान रखिए कि आप कहाँ हैं, कहीं कोई आपको हानि नहीं पहुंचे उन ईयरफोन से। ये बहुत मजेदार चीज है। लोग है ना फोन करेंगे तो करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे। या आप कोई ड्रॉप कॉल है, आपकी कोई आवाज वहां से नहीं जा रही है, तो भाई नेटवर्क का इशू हो सकता है ना, मेरे फोन का इशू नहीं हो सकता। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इट्स नॉट अ पर्सनल थिंग, इट्स अ टेक्निकल नेटवर्क इशू। एक्नॉलेज द डिले इन नेटवर्क। थोड़ी देर में फोन कर लीजिए, रिस्पॉन्ड आफ्टर हियरिंग कंप्लीटली। एंड कॉल वेटिंग इज फॉर वेटिंग, फिनिश द करंट कॉल, डोंट बी इन हरी। इधर भी बात कर रहे हैं, इधर भी बात पूरी नहीं की, और पीछे जो फोन बजा रहा है ना, जो मैंने अक्सर देखा है कि लोगों कॉल वेटिंग का फायदा उठाते हैं। कैसे कि जब फोन कर रहे हैं तो 10-10 बार कंटिन्यूसली फोन कर देंगे। भाई अगर कोई बात कर रहा है तो आपको समझ में आ गया कॉल वेटिंग के टोन से, रुक जाइए ना, वो इंसान दोबारा कर लेगा, या आप 10 मिनट बात कर लेना। बट पीपल विल कीप कॉलिंग, इट्स रियली फनी एंड वेरी बैड। Don't keep calling if someone is not picking, right? Just one ring is enough. एक मिस्ड कॉल और 2 मिस्ड कॉल में क्या फर्क हो जाना है, या 10 मिस्ड कॉल में? उस बंदे ने या बंदी ने तभी फोन करना है जब वो कर पाएंगे, राइट? डोंट टेक अ कॉल और टेक्स्ट इन द मिडल ऑफ अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पहले वो बात पूरी कर लीजिए, और अगर आपको कुछ कॉल लेना है, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको एक्सक्यूज मी बोल के पहले अपना कॉल करके फिर वहां ध्यान दीजिए। बेसिकली फोकस, नेवर एवर टॉक और टेक्स्ट एंड ड्राइव। राइट टेक्स्ट क्लियरली। हम है ना जल्दी जल्दी लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो भूल जाइए, हम सेंटेंसेस ही प्रॉपर फ्रेम नहीं कर पाते हैं। और कौन सा सेंटेंस कहां खत्म होके, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं, कम से कम लाइन ब्रेक दे दीजिए, जिससे सेंटेंसेस में क्लियरली तो आ जाए कि सेंटेंसेस क्या फ्रेम हुआ है। ऑलवेज स्टार्ट विद अ हाई। अवॉइड टेक्सटिंग इन मीटिंग्स एंड क्लासेस। That applies for today also. All right, guys and girls. Don't light up phone screens in the dark theater. Please don't do that. सिर्फ फोन कॉल लेना नहीं, अपना फोन चालू करना है, जो पीछे बैठा है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, तो वो उसको स्क्रीन सामने ठीक से नहीं दिखता है। प्लीज डोंट डू दैट। स्विच ऑफ फोन व्हेन स्टडीइंग, प्लीज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिनर टेबल पे जब सब बैठ के खाना वाना खा रहे हो, प्लीज अपना फोन बंद कर दो यार। फोकस ऑन योर डिनर, लंच, व्हाटएवर यू आर हैविंग टुगेदर। लेट्स फोकस ऑन दैट कॉन्वर्सेशन। एक बहुत अच्छी ऐप है जिसको कहते हैं रिस्पेक्ट। जब आप अपना फोन रख देते हो और किसी को अटेंशन बराबर देते हो, किसी काम को, किसी इंसान को जब आप अटेंशन देते हो, उस ऐप को रिस्पेक्ट कहते हैं। वो आपके पास है, मुफ्त में अवेलेबल, प्लीज इस्तेमाल करिए उसका खूब सारा। इन सारी ऐप्स के साथ उसका भी ऐप का इस्तेमाल करिए। और सोशल मीडिया के एटिकेट्स बड़े सिंपल हैं। मैनर्स मैटर डेफिनेटली। सो नेटिकेट में मोबाइल मैनर्स है, इंटरनेट मैनर्स है, और सोशल मीडिया मैनर्स है। सबसे पहला स्टेप टू एजुकेशन है लैंग्वेज। प्लीज बी वेल मैनर्ड एंड पोलाइट। प्लीज प्लीज प्लीज, फॉर गॉड सेक, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको याद है आपकी माँ ने आपको सबसे पहला सोशल एटिकेट क्या सिखाया था? अंग्रेजी का एक वर्ड था जो आपकी मॉम ने, आप किसी भी, आपकी कोई भी मातृभाषा हो, whatever your mother tongue is, your mom taught you this word in English very hard कि जब हम बाहर हो तो हमें इस वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए उस सिचुएशन में। और वो वर्ड था राइट। वो हमने बहुत मेहनत की थी आपको इसे सिखाने में कि बेटा जब बाहर जा रहे हैं और आपको अगर लगी हो तो यही कहना है, राइट। और आपने माँ के सारी मेहनत की धज्जियां उड़ा दी, आपने माँ का पूरा दिल तोड़ दिया, उनके सारे के सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, क्योंकि अब आप है ना वापस सारी एजुकेशन भूल के you have started using a word which your mom taught you not to use basically, and taught you something better.
And this is the appeal to the millennials because it looks authentic. Even advertising agencies are saying, the brands are saying that, right? On a lighter side. So please mind your language. Please. That's the most important one. ये जो अब्यूजिव लैंग्वेज है बिल्कुल शोभा नहीं देती, और आपको यूज करनी है ना, आपको इसके बगैर अधूरा लगता है, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपस में करो, जो भी करना है एक दूसरे से करो। मेरा तो एडवाइस है वो भी मत करो। It's not a good thing. But anyway, if you feel good about it, and this is just not for guys. लड़कों से ज्यादा तो आजकल मुझे लड़कियों की फिक्र होती है, जो सारी मजेदार और choices of the abuses they are using in Hindi, English, whatever language they use. Yeah? So please don't do that. And that remains my most important message to you. Please mind your language. What type of social media personality are you? Again, a film I will not be able to show you. But let's move on to some of the do's and don'ts, which are pretty simple on social media. ये सब मैंने तजुर्बे से सीखे हैं लोगों के साथ। मेरा सोशल मीडिया पे मेरे प्रोफेशन की वजह से बहुत ज्यादा यूजर्स है, और मैं बहुत ज्यादा पर्सनल ख्याल रखता हूँ। मेरी बहुत ज्यादा पोस्ट होती हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं, और उसमें भी मैं ध्यान रखता हूँ कि कौन सी पोस्ट है जो पब्लिक में नहीं जानी है। तो लेट्स डू सम सिंपल डूज एंड डोंट्स हियर। मेक एन ऑनेस्ट प्रोफाइल। ये ना अपनी बिल्ली की फोटो, कई लोग अपने बच्चों की फोटो, अपनी फैमिली फोटो, और एक फूल की फोटो, कुछ सन मून की फोटो डाल देते। क्यों भाई? आपकी अपनी ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत आपको चेहरा दिया है, अपनी प्रोफाइल डालिए, और सिर्फ इसलिए डालिए कि लोग आपको पहचान सके ना। आप एक तो किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ऊपर से आपकी फोटो भी नहीं डली है, ऊपर से आपने प्रोफाइल भी लॉक कर रखी है। अरे भाई, आप कैसे सोशल पे होना चाहते हो? सोशल मीडिया का एक बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आप अपनी तस्वीर भी नहीं डाल सकते ना, तो आपको हक ही नहीं है सोशल मीडिया पे होने का। और मैं ये व्हाट्सएप के लिए भी कह रहा हूँ, व्हाट्सएप में अपनी फोटो डालिए, खुद की डालिए। आप अपने किसी फैमिली मेंबर के डालना चाहते हैं, पर आपकी फोटो वहां होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स योर प्रोफाइल, that's your own profile, nobody else's. It's like Aadhaar, so you have to put your own photo over there. Create a strong password, very strong. Make sure there is a special character, there is an alphanumeric combination. Always make sure, and please write it somewhere because you will forget it, I'm sure. So please write it somewhere. और बहुत सिलेक्टिव और अप्रोप्रिएट पिक्चर्स पिक करिए। एक पता लगा कि पिकनिक पे गए, एक ही पोज में अलग अलग लाइट्स व्यू, अलग अलग एंगल से खींच के आपने 50 फोटो डाल दिए। I mean, it's not funny. Just put that one beautiful or two beautiful pictures that you really want to put. No, why put these 10, 12 pictures which are basically the same? I mean, they're not adding any value. कंटेंट जब आप शेयर कर रहे हो तो एंगेजिंग होना चाहिए, विटी होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। जस्ट फॉर टाइम पास कुछ भी मत डाल दो। जस्ट मेक श्योर कि आपके कंटेंट की वैल्यू हो वहां पे। एंड बिफोर पोस्टिंग हमेशा स्पेल चेक करना, हमेशा। मैं आपको बहुत तजुर्बे से बता रहा हूं, और अभी लेटेस्ट कल का ही तजुर्बा, ये आई काइंड ऑफ फेल्ड ऑन दिस वन। हम 4 लोगों ने मिलके एक क्रिएटिव स्पेल चेक किया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी एक गलती रह गई। और जब हमने क्रिएटिव पोस्ट कर दिया, उसके बाद वो गलती किसी और ने देख के हमें बताई। तो इमेजिन व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, वहां ये गलती होने के चांसेस होते हैं। तो आप तो वैसे ही इतनी जल्दी में टाइप कर रहे हो कि आपकी तो स्पेलिंग्स का कोई नहीं है। शॉर्ट फॉर्म्स लिख दिए तो समझ में भी नहीं आता कि बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स क्या है वो। प्लीज राइट क्लियरली एंड ऑलवेज स्पेल चेक। स्ट्रेंजर्स से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट मत लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो अपने किसी कॉमन फ्रेंड से पूछ लीजिए ये कौन है, और अगर फिर आपको ठीक लगता है तो एक्सेप्ट करिए। एज अ रूल आई डू नॉट डू दिस। मैं पहले ना एक मैसेज भेज के पूछता हूँ कि आप मुझे कैसे जानते हैं, फिर मैं अपने किसी कॉमन फ्रेंड अगर है तो उनसे पूछता हूँ कि ये कौन है। उसके मैं तो मतलब आई एम प्रीटी ओल्ड, आई मीन आई एम नॉट इवन इन दैट कैटेगरी कि मैं मुझे कोई बहुत मेजर हार्म होने वाला है, मतलब इन सारी चीजों पर। आप लोग यंग हो, और स्पेशली गर्ल्स, प्लीज बी केयरफुल। ये जो अच्छे दिखने और अच्छे वाले बहुत प्रोफाइल वाले हैं ना, बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑन ऑल दोस थिंग्स। डोंट सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट टू ऐड नंबर्स। जबरन किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेज दो। जब तक आप किसी को जानते नहीं हो, आप प्लीज फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजो। पर अगर आप किसी को भेज रहे हो, जैसे मान लो आज के सेशन के बाद आप में से कुछ लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं कि अच्छा हाँ हमें सर से कनेक्ट करना है, तो प्लीज एक मैसेज डाल के भेजो कि मैंने आपको यहाँ सुना था, यहाँ देखा था, मिला था, मिली थी, व्हाटएवर, और मैं आपसे फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहती हूँ या चाहता हूँ।
So you have to make sure that you are sending requests to only people who really add value to your life, not for adding numbers. Don't share everything happening in your life. Choose wisely. Please choose wisely. And दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ की हर चीज को पोस्ट करना जरूरी नहीं है. ध्यान रखिए कि वहां इट इज अ सोशल एनवायरनमेंट, मीडिया है जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, कल को मिसयूज हो सकती है. और ये ना टैगिंग का धंधा बंद कर दीजिए. एक पोस्ट की और अपनी मर्जी से अपने 10-50 दोस्तों को टैग कर दिया. प्लीज डोंट डू दैट. किसी को भी टैग करना है उनकी परमिशन से करिए, उनसे पूछ के करिए. मैं कोई अपना क्रिएटिव भी अपलोड करता हूँ और अगर उसमें किसी की फोटो है तो उनको बता के करता हूँ या उनसे परमिशन लेके करता हूँ कि भाई इसमें ये क्रिएटिव में आपकी फोटो है, आपको टैग करना. दैट इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट. प्लीज कीप इन माइंड दैट. और ये ऐसा है कि जितना बोओगे उतना काटोगे, उतना ही फल मिलेगा. तो जितने लाइक्स आप लाइक करोगे उतने ही लाइक आपको मिलेंगे. इट्स अ टू वे स्ट्रीट. ऐसा नहीं है कि आप अपनी फोटो डालो और आपको बहुत सारे लाइक्स चाहिए और आप किसी को लाइक ही नहीं कर रहे हो. सो यू हैव टू मेक श्योर द अप्रिसिएशन हैज टू बी टू वे. आपको जब बर्थडे पे विशेस आती हैं तो 50 लोग अलग अलग विशेस आपको भेजते हैं और आप क्या करते हो, एक लॉक स्टॉक बैरल थैंक यू एवरीवन करके एक पोस्ट डाल देते हो. नॉट गुड. उतना टाइम लीजिए कि हर उस आपने सबको फ्रेंड ऐड किया हुआ है ना आपकी लाइफ की, आपकी फ्रेंड बुक फेसबुक के या इंस्टा में आपकी वो लिस्ट है ना पूरी की पूरी. तो जब उन लोगों ने टाइम निकाल के आपको हर एक ने अलग अलग विश किया तो हर एक को अलग अलग प्लीज थैंक यू बोलिए. प्लीज टेक टाइम आउट फॉर देम. गिव ड्यू क्रेडिट टू ऑल कॉपी कंटेंट. जब भी आप कहीं से कंटेंट चुरा रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो उसको लिख दो शेयर फ्रॉम हियर. या कहीं से कोई अच्छा लगा उसका आप कॉपी करके अपने टाइमलाइन पे डाल रहे हो तो उसको लिख दो शेयरिंग योर दिस थिंग. इट्स वेरी नाइस. दीज आर सिंपल मैनर्स. दीज आर एज सिंपल एज मैनर्स. ऑलराइट. मैसेज ऐप्स प्राइवेट चैट के लिए. यू नो इंस्टा में प्राइवेट चैट है. फेसबुक में एक प्रॉब्लम है कि लोग जैसी कमेंट दिए कि वेरी नाइस ड्रेस, हाउ आर यू, तो वहीं पे एक चैट शुरू हो जाती है. अरे आई वाज गोइंग हियर एंड आई वाज आउट ऑफ टाउन. और फिर वो वहां से एक लंबी चैट. नो नो नो, प्लीज डोंट डू दैट. Let that private chat happen in the private chat boxes itself and clean up once in a while. हर 3 महीने में एक स्टॉक लीजिए अपनी फ्रेंड लिस्ट का और उसमें से बेहिचक बेझिझक वो सारे लोग हटा दीजिए जो डॉर्मेंट पड़े हैं, जिनका कोई यूज नहीं है. कई बार हम चीजें इन अ मोमेंट इन अ सिचुएशन ऐड कर लेते हैं. हम वो सिचुएशंस इसलिए कर लेते हैं कि चलो किसी को बुरा नहीं लगे तो चलो अच्छा ऐड कर लेते हैं. वी डू दैट. तो मैंने लैंग्वेज के बारे में आपको बता ही दिया कि नेवर डू दैट. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉलिटिकल और रिलीजियस पोस्ट अवॉइड करिए. आप कितने भी क्रांतिकारी हो, प्लीज अपने ग्रुप में अपने अपने परिवार में रखिए. ये सोशल मीडिया पे मत ले जाइए. ये वो ब्लैक होल्स हैं जहां एक डिबेट शुरू होता है तो हम बिना पर्सपेक्टिव समझे एक दूसरे के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाने लगते हैं which looks really bad. These are really the manners that one needs to be taking care of. Please don't fight and abuse on social media and don't get into debates. ठीक है, जाने दीजिए. आपको डिबेट करना है, अलग से चैट पर ले जाइए, व्हाट्सएप पे ले जाइए, मैसेंजर पे ले जाइए. वहां ब्रेवरी दिखाने से कोई फायदा नहीं है ना. दूर दूर से अपने आप को शेर बताने से क्या फायदा. सामने सामने मिलके तय कर लीजिए who's right or wrong and don't market yourself on a social media until and unless you have a service, until and unless you have a restaurant, you have your own boutique, you have your own service or product which you are which is your own. Don't market yourself. Don't just reach out to people for the heck of it. लड़कियों के लिए खास है, कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी जरा सा यार ऑब्सीन कमेंट करे, उसको ब्लॉक कर दो. मैं हैरत होती है कई बार कि लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि वो मुझे लगातार मैसेज भेजे जा रहा है और मैंने उसको मना किया. अरे पहले मैसेज के बाद ही ब्लॉक कर दीजिए. मैं ऐसी पुलिस की वो रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ, न्यूज़पेपर में आता था, उसने मुझे 3 महीने तक मैसेजेस भेजे. हाउ डेयर कैन ही सेंड और शी कैन सेंड अ मैसेज लाइक दैट. यू कैन ब्लॉक इट द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ. दैट्स इट. जितने नंबर से आए ब्लॉक कर दीजिए और उसके बाद रिपोर्ट करिए. ब्लॉक एंड रिपोर्ट.
And do not share your password with anyone. No one. Just keep it with your mom in the almirah. Actually, your mom is a dangerous person, no? So you will not share it with your mom, right? Not with your siblings. So don't worry. Keep it in an almirah, write it somewhere, and keep it in an almirah on a piece of paper, write it. The bottom line remains, these are all public sites. You have to, as I said, etiquette और netiquette में कोई खास फर्क नहीं है. सोशल मीडिया पे भी आपको वैसे ही वो करना है, डालनी है जिससे आपकी मॉम, आपकी ग्रैंड मॉम, आपका टीचर एम्बैरेस हो जाए कि उसको देख के उसे ऐसा लगे, उफ, I never expected this thing, and you know, this is where you need to take care of this. So I'm once again a lovely film which I wanted to share with you, and my apologies again. I'm so sorry the videos are not giving you the audio. I have no idea why. I'll figure out after this session what happened wrong here. And probably Eugene will help me later on this once we finish this session. So social media is the new drug into the world. ये एक नया drug है, okay? और ये कहीं से हमें खरीदना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, ये हमारी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है. ये ड्रग वो है जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है. एक तस्वीर डालते ही कितनी लाइक्स आ जाती है और हमें कितनी खुशी मिल जाती है. ये एक कमेंट डालते ही कितने सारी खुशियां हमें मिल जाती हैं. एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी पोयम, एक अच्छा राइटअप डालते ही कितनी खुशियां हमें इंस्टेंट मिल जाती हैं. ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. पहले हमें क्या करना पड़ता था, हम लोगों के जमाने में तो कोई मेहमान आता था तो उसको माँ बाप जबरदस्ती बोलते थे, अच्छा बेटा कविता सुनाओ, अच्छा बेटा गाना सुनाओ, अच्छा बेटा गिटार प्ले कर दो, तो हमें तब ग्रेटिफिकेशन मिलता था. पर यहाँ ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है. अपना वीडियो अपलोड करो और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पाओ. और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सोशल मीडिया का एडिक्शन जो है, ये कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ में आ जाता है. हम वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये हमें रियल लाइफ में भी मिले, और वो पॉसिबल नहीं है. वो रियल लाइफ ग्रेटिफिकेशन एक बहुत लंबा सफर है जब हमें मिलता है. पर हाँ, सोशल मीडिया का फायदा है. मैं ये मानता हूं कि ऐसे बहुत सारे टैलेंट जो बच्चों में टाइम लगता था, आज वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं. लेकिन हमें एक बैलेंस ये बना के रखना है कि रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ में बहुत फर्क है. तो रियल लाइफ में ग्रेटिफिकेशन आने में टाइम लगेगा. डोंट गेट कैरिड अवे विद द सोशल मीडिया ग्रेटिफिकेशन. So basically have a life, okay? And I would love that somebody has a life more than, you know, everything on social media. So the ultimate goal in life today is all these likes in the head. But the ultimate goal in life should be happiness. This is the ultimate goal which is required. और happiness कहाँ से आती है? Happiness ना एक chemical formula है. एक बहुत आसान, simple chemical formula है. आप happy क्यों होते हो? क्योंकि आपके दिमाग में एक केमिकल लोचा है. You have it. It's all in your mind. Your happiness, your sad, it's all in your mind. And how do you keep yourself happy? So I'll have to skip once again a lovely film, and my apologies again for that. So dopamine is something which makes you happy. एक केमिकल है dopamine जो आपके दिमाग में जब होता है तो एक्सट्रोवर्ट्स को खूब सारा चाहिए और इंट्रोवर्ट्स को थोड़े में ही काफी हो जाता है. तो ये डोपामाइन जो है, ये कैसे वर्क करता है? जैसे आपके इमोजीज है ना? दुनिया में सबसे ज्यादा 2 इमोजी यूज होने वाले हैं, हंसने वाला और दिल, राइट? ये सबसे ज्यादा यूज इमोजीज अमंग द टॉप 40 इमोजीज है. तो ये जो है, ये आपको हैप्पीनेस देता है. ऑलराइट, यहां से जो डोपामाइन का इफेक्ट है, वो मिलेनियल्स क्या क्रेव करते हैं? ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सपोर्ट इश्यूज उनको चाहिए, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए. You know, all these things millennials are looking for me, and this is all about me. You know, I want this. It's all about this. And they are in a situation where brushing your teeth is second to only a mobile phone importance. So mobile phone is the highest. 96% millennials rank mobile phone is the top most important thing in their life, and even brushing teeth comes second. Everything else is secondary, you know. Deodorant also late. And as I shared earlier with you, food, car, internet access, and mobile. So food and car comes a little higher कि अगर वो मिल जाए लाइफ में तो जरूरी है, वरना internet access and mobile phone are the top, is the third most important thing in life. And sex, obviously, and alcohol comes much later in life. Everything else comes much later. So my phone is like my lover. It's the last thing I see at night and the first thing I wake up to every morning. That's
what my phone is. Nobody can ever take the place of my phone. When someone touches my phone, I automatically turn into a ninja. Automatically, it is the phone which I protect. And all I'm saying is keep calm, love your phone. Smartphones are here to stay, definitely here to stay, but we need to do a balancing act. There is a balancing act which is required. And this balancing act is today, this is the scenario: life outside mobile versus life inside mobile. This is how we're spending our lives. This needs to change like this. Yes, there will be a life inside mobile. There will always be one. It's a beautiful device. It's a very useful device. It's an amazing device and technology. Yes, it's a part of our life, but we need to balance this. We need to weigh the pros and cons of both the things. How it is affecting our health. I mean, at the end of the day, if it is affecting your happiness level, if it is affecting your sleep, then I think there is a problem there. So one needs to take care of it. And things like, wearing earphones, walking on the road, loud videos playing in public area and all. We need to weigh all these things. And yes, there are the positive that it brings the world to us. We can achieve a lot of things. मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो मैं गूगल पे कंटेंट सर्च करता हूँ, कभी हमें लाइब्रेरी में जाके सर्च करना पड़ता था. मैं जो डिक्शनरी के वर्ड्स बैठ के जो ढूंढने में टाइम लगता था, मीनिंग वगैरह, आज इंस्टेंटली वो गूगल पे मिल जाते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर एक्सेसिबल टू अस राइट अवे राइट नाउ. Yes, we should thank the technology for that, but we need to be also taking care of our lives with the cons, because with freedom comes great responsibility. Please remember this. You are responsible for your own life. At the end of the day, you have to take this call. At the end of the day, you have to decide how you use your phone, how you use a device, how you use a laptop, how you use the internet world. Your netiquette will come only from you, and nobody else can do it for you. We can all come together, do these sessions, take you through the revision courses. Yes, this is good, but at the end of the day, you have to implement them. You have to take care of yourself. So keep calm and please take care of yourself. Dopamine has to be full. Never let dopamine be empty. There are some brilliant foods which help you. Chocolate is one of them. Calcium is another one. I mean, drink milk, it's good. Walnuts are there, orange is there, egg is a good dopamine provider, banana is there, it has magnesium. So these are good things. When you're feeling down and you are craving for for your phone, just for a moment, just leave it there. Try a bite of chocolate, try a bite of banana. Do that. अगर आपने कभी स्पोर्ट्स में देखा होगा खिलाड़ियों को खेलते हुए, खासकर टेनिस वगैरह में जब दिखाते हैं वो, तो they eat banana during the games, और वो पूरा नहीं खाते. 3-4 गेम्स के बीच में एक छोटा सा बाइट ले लेंगे, फिर खा लेंगे. They are keeping their energy and motivated levels high. This is the dopamine effect which they are working on. और कभी कभी इसको पावर ऑफ कर दीजिए यार, दिन में करके तो देखिए, प्रैक्टिस में लाइए और दुनिया खत्म नहीं होगी. कोई ऐसा आपकी जिंदगी में इवेंट नहीं होगा जो आपको परेशान करेगा. It will actually give you a little peace to switch off your phone and use your phone wisely. Definitely. This is an amazing film. Someday, some other time. Really sorry, this is a lovely film which I wanted to end with. Can't do anything, so we'll have to skip on this. It's a jungle out there. Please be careful. It's a huge jungle out there. So you got to take care of yourself. You got to be your own person managing your life between your phone, between your phone, between your laptop, between your internet, and between your own life outside. So you have to manage your etiquette. You have to manage your netiquette. It's all up to you. Just be careful. Take care. Over to you, Nida ma'am. Hello? Hello, sir. Yes. Yes, Siddharth, over to you. Okay, great. Thank you so much, sir, for the wonderful insight on the topic netiquette. And let us move on and check the chat box if there are any
question. All of you, all the students who are listening to us, can drop in your queries and questions. Siddharth, your voice is cracking and echoing. Your voice is cracking and echoing. Okay, just give me a minute. There is a mobile device somewhere switched on near you, or a laptop. Two devices are on near you. Hello. Can we have everybody now? The videos on, please. Yes, Can we sir. have the videos on? I mean, people have still not switched on the videos. Let's see your beautiful faces. Yes, Rajesh, I would like to see the faces. If you guys are there comfortable, please do turn on your videos. And I would again request all of you to please drop in your queries, if any are there. We would surely try to manage a better interaction with no technical glitches. I apologize for the technical glitch, but we can't seem to, our technology can't really help it. But yes, we will definitely take care of all the measures next time. And I would like to invite Nida ma'am for presenting the word of thanks to our respected guest and to the audience. Over to you, Nida ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. Like it is a saying that as all good things come to an end in life, so is the session. So on behalf of management of Bhopal School of Social Sciences, I take this opportunity to propose vote of thanks. I would like to thank our resource person, Mr. Rajiv Mishra, sir. We are really enlightened with your knowledge and presence, also making excellent presentation and making this webinar interesting and meaningful. I would like to express my sincere thanks to Father Dr. John PJ for providing the platform and his support and motivation. I thank our Vice Principal, Dr. Soni Kurian, for her support. I would like to thank our HOD Ma'am Humanity Department of Psychology for her support. And I extend my thanks to Dr. Vinay Mishra, sir, for always guiding and having a moral support from him. A special thanks to my colleague Mukti ma'am, Siddharth, and also I would like to extend my special thanks to the technical staff for their unflinching support and coordination. My heartfelt thanks to all participants for active participation. With these warm words and a kind message, we move to the end of today's seminar. Thank you so much. Thank you once again. Thank you so much, everyone, for being there. Thank you so much, Rajiv sir, and for the wonderful insights. And yes, a feedback link will be circulated to your WhatsApp groups. Please make sure you fill up the feedback form. It will be helpful for us. And Rajiv sir, it was a privilege for us to have you. And we hope we keep having you here at the Bhopal School of Social Sciences again and for days to come. Thank you so much, everyone, for joining in. So here's one thing that I wanted to share with all of you. I owe you one more session. This is on me, where the audio is working fine, and I owe you to this entire group where we could do it better, because those videos would have really helped in making the point which I was trying to make, and we would have extended the session. Just because the video is not playing, we had to finish it earlier. But this is one on me, and I owe you guys. Next time, whenever you want it, let's do it again. And I promise I will sort out the technical snack by then. Same as I will also try next time. So, koi bhi dikkat na ho. Obviously, all the measures, we'll keep all the measures checked. And we love your spirit. We love your presentation. Thank you so much for being there, Rajiv sir. Thank you, guys. God bless you all. Thank you so much, sir. Bye-bye.
Friends, the feedback form link is in the chat section. Please do fill it. And if you're not able to access it, we will also circulate the link in your WhatsApp groups. Please do make sure you fill the feedback form today itself. Thank you once again. Ma'am, will the feedback form will be sent to the WhatsApp group? So Adrita has asked a question whether the feedback form will be sent to the WhatsApp group or not. Yes, Adrita, it will be sent to your respective WhatsApp groups depending upon your class. So you can fill it there itself.